Hello students, welcome back to Team 11. Kali हम पढ़ी chemical bonding, right? So lecture 1 हम पढ़ी last class and lecture 1 रे हम topic कौन cover करते what is a chemical bond? That means introduction to chemical bonding, right? And what are the different cause of the chemical combination of different atoms or different ions or why do atoms combine? Atoms माने काहे की combine करते, ions माने काहे की combine करते, right? और chemical bond माने काहे की form produce करते. एटम्स और आयंस माने केमिकल बॉन्ड काहे प्रोड्यूस करते हैं सेठी लास्ट देखि गेले से ठीक अछि जदि आपण मन देखि नांती त आपण जाई कि प्रीवियस लेक्चर देखि दियौ ठीक अछि त ताको देखला परे जदि किछि डाउट्स रहबो तो मते पछरी आपण तो कमेंट और मैं आपनकर आंसर डेफिनेटली आपण को क्लियर करेबी जहां भी आपण को प्रॉब्लम अछि एंड प्रीवियस लेक्चर के वॉइस बहुत खराब थिला एक्चुअली एंड मैं ट्राई करू छु ताको फिक्स करबा पे ठीक अछि yes we are working on it and total भी टेंशन नहीं नहीं हमें ट्राई करू आपको ठीक से लेक्चर डिलीवर करबा पे आपण आराम से बसी पाठ पढांते आपनकर केमिस्ट्री क्लियर करबा दैतो हमर ठीक अछि ओके तब लास्ट क्लास हम पढ़ले कोन की व्हाट इज a chemical bond and why do atoms combine or what are the different causes of their chemical combination of or what are the cause of chemical combination of different atoms ions and last देख ले कि first cause of chemical combination that means Lewis octet rule और Lewis exactly Lewis and Costello हमको एक्सप्लेन किया करबे चाहूतले कि एटम्स माने और आयंस माने कंबाइन इतने होते काहे कि से चाहते सन का आउटर मोस्ट करते एक इलेक्ट्रॉन प्रति देख right and Neil Bartlett in 1962 तो से हमको सेकंड कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर ले एंड से कहले कि नहीं eight electrons position is not the only cause. Atoms actually combine eating only because they want to minimize their energy, or you can say to make itself stable, right? और elements वाले निजों को stabilize कर जाते हैं, तो energy minimization से माने bond produce करते हैं, तो bond कितने produce करते हैं, because से उनको stability attain कर जाता है, and stability attain different way कर जाएगा, जैसे कि by attaining or by obtaining 8 electrons in the outermost shell and किसी elements और उनका energy को minimize करके stable ऑफिंग रहेगा और यानी चलते जितने अधिक energy जितना अधिक unstable जितना less energy जितना अधिक stable ठीक है तो जो मैंने high energy possess करते हैं तो मैंने try करते हैं to reduce their energy to minimize their energy so as to make itself stable तो निजों को stable बनाने पर तो मैंने energy को minimize करते हैं तो last class में यही पढ़ेंगे ओके So, आज पढ़ेगा classification of chemical bonds. So, चलो तो लेकर write down. So, what are the different types of chemical bonds? So, different types of chemical bonds are found. Usually, chemical bond is of two different types. Chemical bond के तो फंदे दी टाइप के फंदे ठीक है तो कौन फंदे तो गोटे होची हमें देखिछन दिया कि chemical bond करा ना it's a force of attraction chemical bond करा it's a force of attraction between two atoms or ions that holds them together as a stable molecule. Last class में पढ़ी discuss करते हैं तो जेते एउटा force of attraction तो force of attraction ता अपन atoms सन भीतर करियो ions सन भीतर करियो and एमिति ही करियो कि molecules सन भीतर तो force of attraction दोछ ना तो सी type of chemical bond जिनसे हम मेंशन दी weak van der Waals force of attraction hydrogen bonding ठीक है एमाने भी होछंती type of chemical bond माने weak थांती but still there chemical bond ठीक है और force of attraction देने में कोई प्रयास नहीं तो chemical bond कौन थांती तो mainly it is of two different kinds one is interatomic और फिर थांती intermolecular ठीक है तो गोटे अछि interatomic और गोटे अछि intermolecular तो interatomic कौन interatomic माने force of attraction between two atoms or two ions देखा atoms और ions भितर जो force of attraction है सेटा को कहते हैं interatomic and intermolecular कौन
force of attraction that exists between two molecules. The molecule ଭିତରେ ଯୋଉ type of force of attraction ରହେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି intermolecular force of attraction and ଆକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ interatomic force of attraction, right? और ये होची आपनका interatomic chemical bond, ये होची intermolecular chemical bond. Okay, चलो नेक्स्ट देखो. So interatomic अछंती, again interatomic chemical bond is of three different kinds. ये पूरी तीन टाइप का. गोटे होची covalent bond, गोटे होची ionic bond और जो कहते इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ionic or electrovalent bond, right? And the third one is metallic bond. Third one is metallic bond. So it is covalent bond, it is ionic bond or electrovalent bond, and it is metallic bond. ठीक है. सेमते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अछि और इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग अछि ये केते टाइप रो ये पुनी देखे. गोटे होछि H बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ଏ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ ର ଯୋଉ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थांती ସେମାନେ डिफरेंट काइंड ऑफ थांती, ସେମାନେ डिफरेंट मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप ର फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थांती. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेमति कि मैं कहि परिबा डाइपोल इंटरैक्शन, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डाइपोल. बीट डाइपोल भितर जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखुछांती तो हम कहि परिबा डाइपोल इंटरैक्शन. देन dipole induced dipole interaction, dipole induced dipole interaction हम देखले कोन ना intermolecular force of attraction थांते. intermolecular force of attraction it is of two different kinds. जो होची hydrogen bond और वो होची different types of weak molecular forces. Okay, तो से कोन सब weak molecular forces जो होची dipole interaction, वो होची dipole induced dipole interaction, वो होची induced dipole instantaneous dipole interaction, right? What was dipole interaction? What was dipole induced dipole interaction? What was induced dipole instantaneous dipole interaction? And these तीन type of force of attraction है between molecules. सेवन को कौन थी weak van der Waals forces, weak van der Waals forces WVF. कौन थे WVF, weak van der Waals forces. Okay, W for weak, V for van der Waals, VANDERWALS, van der Waals. F for force, W for weak van der Waals forces, right? It is the weak van der Waals forces. And apart from these three intermolecular forces, another two intermolecular forces are there. जो होचंदी ion dipole interaction, और वो होची ion induced dipole interaction. Ion induced dipole interaction and also the other forces, right? Other forces, ठीक है. तो ये देखो ये होची आपनकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. तो केमिकल बॉन्ड्स कौन होचंती ना फर्स्ट कथा में कहले केमिकल बॉन्ड इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. तीन कैटेगरी क्लासिफाइड तो होची इंटरएटॉमिक और होची इंटरमॉलिक्यूलर. इंटरएटॉमिक और इंटर आयोनिक में कहि करियो, राइट? इंटरएटॉमिक और इंटर आयोनिक और होची इंटरमॉलिक्यूलर force of attractions. तो जो इंटरएटॉमिक अच्छी और इंटर आयोनिक इट इज ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड्स. तीन टाइप ऑफ बॉन्ड. गोटे होची कोवेलेंट बॉन्ड, गोटे होची आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और गोटे होची मेटालिक बॉन्ड. सिमिलर वे
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थांती एमाने दी टाइप्स थांती तो गोटे काइंड होची कोन हाइड्रोजन बॉन्ड राइट आ गोटे होची कोन ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन जो हम कहउछंती वीक वंडरवल फोर्सेस राइट देन एक इंटरव्यू छाड़ला परे आउ दुटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होचंती जोटा होची आयन डाइपोल इंटरेक्शन आ गोटे होची आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ओके एमान होचंती कोनसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखो ना एना होची सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ठीक अछि तो फर्स्ट हम देखला कोन कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट हमको पढ़िबा कोवेलेंट bond. So what is a covalent bond? So what are the different kinds of covalent bonds are there in chemical bonding? Chemical bonding रे different types of covalent bonds जो कौन कौन अच्छी हमें ता विषय रे डिस्कस करियो पूरा एलाबोरेट करके डिस्कस करियो ठीक अछि अपन देखंतु हेडिंग दियंतु covalent bond हेडिंग दियंतु covalent bond ठीक अछि so what is a covalent bond ये covalent bond पहले कौन बुझंती a covalent bond होची कोन the type of chemical bond that is formed due to equal contribution of electrons right or we can say the type of chemical bond that is formed due to mutual sharing of electrons that means beta atom ठीक है beta atom equal number of electron contribute करके जदि bond बनौछंती ताहाले ताकि कोनती इट्स ए कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है यूजुअल देखो हमें ये जानि चंदी कि एक्सेप्ट ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को छाड़ देले हमें जिते मैक्सिमम जिते बॉन्ड देखु चंदी तो सब गोटे बॉन्ड रो मीनिंग होची 2 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो गोटे सिंगल बॉन्ड अछि माने ये पाखे मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट तो गोटे बॉन्ड जेते दुटा एटम भीतर एग्जिस्ट करूची तो सेते बेले से बॉन्ड रे जो दुटा इलेक्ट्रॉन अछंती दुटा जक इलेक्ट्रॉन पाई दुटा जक बॉन्डेड एटम रो इक्वल कंट्रीब्यूशन थाए दैट मींस ये गोटे इलेक्ट्रॉन देले से गोटे इलेक्ट्रॉन दे दिजन जक गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करके जो टाइप का बॉन्ड बनांती सेटा को कहउछंती कोन इट्स कोवेलेंट बॉन्ड और ये इक्वल कंट्रीब्यूशन जो बॉन्ड बनांती ताको कहउछंती कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है राइट डाउन so what is a covalent bond a covalent bond also like the type of chemical bond the type of chemical bond that is formed the type of chemical bond that is formed due to equal contribution of electrons equal contributions or you can say mutual sharing a type of chemical bond that is formed due to equal contribution or mutual sharing of electrons is called a covalent bond this is called a covalent bond ठीक है so what is a covalent bond a covalent bond is the type of chemical bond that is formed due to equal contribution or mutual sharing of electrons right so ये होचा आपनकर covalent bond देन देखिए हमें इस कोवेलेंट माने तो अपन माने के चलते कि दुटा एटम अछि माने तो टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स माने तो x and another atom is y तो गोटे x अछि और गोटे एटम अछि y ठीक है तो x अछि और गोटे एटम अछि y तो जब भी एंड गोटे बॉन्ड बनुची बिटवीन x and y तो हमें एबे जस्ट कहले अपन को कि गोटे बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वन बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स ठीक अछि गोटे बॉन्ड रो मीनिंग होची 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड केमती बनिथिबो ना इटा कोन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनिथिबो दैट मींस x रो इट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अछंती
दुईटा इलेक्ट्रॉन से गोटे हेतिबो कार गोटे हेतिबो x रो आ गोटे हेतिबो y रो ठीक अछि तो x गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करछि y गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करछि तो इक्वली शेयर करके बॉन्ड बनै ठीक और अपन एमती बुझी परिवे कि मानंतु देखो बॉन्ड फास्ट को माने बनंती बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन माने बनंती जो माने आउटर मोस्ट शेल में थांती एंड अनपेयर्ड थांती यूजुअली आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट थिबा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने बॉन्ड प्रोड्यूस करते तो मानंतु x होची गोटे एटम जा पाखरे गोटे इलेक्ट्रॉन थिला ठीक अछि एंड y होची गोटे एटम जा पाखरे अनदर या पाखरे गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछंती तो ये जदि इलेक्ट्रॉन को यार यार इलेक्ट्रॉन एंड यार इलेक्ट्रॉन भितर जदि बॉन्ड बनछि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड ये बॉन्ड को कहउछंती कोवेलेंट बॉन्ड बुझियला माने कोवेलेंट बॉन्ड को बुझि परला तो दैट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन अछि एटा होछि x रा ये इलेक्ट्रॉन अछि एटा होछि y रा एंड ये गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करिछि एंड ये इलेक्ट्रॉन का ये शेयर करिछि एंड दिस इज अ इक्वल कंट्रीब्यूशन में equal electron contribution में गोटे बॉन्ड प्रोड्यूस करछन एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड को बॉन्ड इट्स ए कोवेलेंट बॉन्ड ठीक अछि ओके ठीक अछि देखा एबे क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रो क्लासिफिकेशन ठीक अछि अच्छा मते कोनतो आपण केते टाइप रो कोवेलेंट बॉन्ड जानछन ठीक अछि कोन जानछन आपण कोवेलेंट बॉन्ड गोटे होछि पाई बॉन्ड और होछि सिग्मा बॉन्ड बस ठीक अछि नहीं एक्चुअली देखंतु कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सेवरल काइंड कोवेलेंट बॉन्ड माने सेवरल काइंड्स अछि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अछि फॉर एग्जांपल आपण कहि परिए जे कोवेलेंट बॉन्ड अछि देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोवेलेंट ताकि जदि आपण क्लासिफाई करिवे तो ये बहुत टाइप रही है जैसे कि अपना ठीक अच्छे हम अपना पाई बॉन्ड गोटे अच्छे अपना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जैसे पाई एंड सिग्मा अच्छे सेमती अनदर बॉन्ड इज आल्सो देयर कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड डेल्टा एंड अनदर बॉन्ड इज आल्सो देयर कॉल्ड पाई बॉन्ड देखा ये सब होछने कोन कोवेलेंट बॉन्ड रो एग्जांपल पाई सिग्मा डेल्टा पाई आउ कोन कोन अछि आउरी अछंती जेमति कि मानंतु हम जे कहउछंती ना दुईटा एटम भितर जदि गोटे बॉन्ड रहउछि ताको हम कहउछंती इट्स अ सिग्मा बॉन्ड राइट जदि टू एटम्स आर bonded by a double bond it is in this double bond one bond is sigma another bond is pi you see and if two atoms are bonded by a triple bond that means three bonds between two atoms then one bond is sigma and the two others are pi किंतु मते गोटे कथा कहंतु जदि if two or if four bonds are there if four bonds are there between two atoms दुईटा एटम भीतर जदि चारटा बॉन्ड अछि तार नेम होछि कोन क्वाड्रुपल बॉन्ड कोन कोन कहते क्वाड्रुपल U U A D R O P L E क्वाड्रुपल बॉन्ड रो मीनिंग होछि कोन फोर बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स फोर बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ओके सिंपली सिंपली क्वाड्रुपल बॉन्ड अछि सिंपली if five bonds are there between two atoms or if two atoms are bonded by five bonds five पांचटा बॉन्ड जदि दुईटा एटम भितर प्रेजेंट अछंती ताको कोनची क्विंटोपल बॉन्ड कि कोनते क्विंटोपल ठीक है अच्छा आउ कोन हेतरे को डिफरेंट काइंड रो कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कहि परिबा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कने गोटे कोवेलेंट बॉन्ड कहि परिबा कि यस so coordinate bond is also a special case of covalent bond ठीक अछि
कोवेलेंट बॉन्ड रे कोन बनती ना इक्वल कंट्रीब्यूशन बॉन्ड बनती और म्यूचुअल शेयरिंग बॉन्ड बनाते बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट कंफाइन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनती ठीक है सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट मींस अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है आउ कोन बॉन्ड अछि कोवेलेंट बॉन्ड देखा आउट अछि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ठीक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से भी होची गोटे स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखा ताको छाडी कि आउ किछ अछि कि आउ किछ कोवेलेंट बॉन्ड अछि हम पाखरे यस ब्रिज बॉन्ड भी अछि आपनकर कोवेलेंट बॉन्ड अंडर ब्रिज बॉन्ड ठीक अछि मन में देखंती जो ब्रिज बॉन्ड थांती ब्रिज बॉन्ड दिटा टाइप का थांती गोटे होची 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और गोटे थांती 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ठीक अछि ब्रिज बॉन्ड इज ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स गोटे होची 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और गोटे थांती 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को यहाँ बनाना बॉन्ड बोली कहते बनाना बॉन्ड बनाना ठीक है so these are different types of covalent bond present in chemical bonding रे ये होची different types of covalent bonds अछंती ओके ओके देखिए हमको क्लासिफिकेशन कौन अछंती गोटे होची आपनकर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड ठीक है हाई बॉन्ड quadrupole bond that means 4 bonds between 2 atoms quintupole bond that means 5 bonds between 2 atoms coordinate bond तो बुझे बुझे coordinate bond ये होची गोटे स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और गोटे होची ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देन आसुची आपनकर ब्रिज बॉन्ड इज अगेन it is of two different kinds गोटे होची 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और गोटे होची 3 center 4 इलेक्ट्रॉन जोटा 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सेटा हमें बनाना बॉन्ड बोली कहते हैं बनाना बॉन्ड जोटा के आपनकर अछि कोठी डाइबोरेन B2H6 कोठी मॉलिक्यूल B2H6 अछि देखो टोटल भी टेंशन होंतनी हमें ईच टाइप रो कोवेलेंट बॉन्ड को ठीक है ईच टाइप रो कोवेलेंट बॉन्ड को हमें कवर करिए ओके अपन जब प्रिपेयर करछंती जे एडवांस नहीं तो अपन को किछि प्रॉब्लम होने अपन आराम से पढ़ंतु हमें सब जिते अच्छे टॉपिक और इथे अपन जिते सब टॉपिक अच्छे समस्त को कवर कर चलिए तो अपन कौन सी प्रॉब्लम अपन को सीख जीवन ठीक है तो ये होचे अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पढ़ी सरला परे बर्तमान पढ़िया केमती ना कोन ना हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ठीक है लुईस जो हमको कांसेप्ट देथिले लुईस ऑक्टेट रूल और से लुईस ऑक्टेट रूल को माने कि हमको केमती डिफरेंट सब स्पेसेस बनाकर डिफरेंट आयोनिक स्पेसेस और अपन कहि करिए कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाकर जो माने लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करंती तो माने स्ट्रक्चर केमती ड्रॉ करिया लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन जो 10th तक से चिंतित नहीं ठीक है तो ये देखे डिफरेंट तो हमें देखो कौन केमती लुईस स्ट्रक्चर केमती हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स लुईस स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर मीनिंग होची हाउ टू ड्रॉ व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो डिफरेंट मॉलिक्यूल रो स्ट्रक्चर और अपन कहि परिबे कि गोटे मॉलिक्यूल के केटा मॉलिक्यूल फार्मूला मु जणा अछि मानन तो गोटे मॉलिक्यूल गिवन अछि COCl राइट मानन तो अपन गोटे मॉलिक्यूल गिवन अछि COCl तो हमके मॉलिक्यूल देखिले थोड़ा पड़ुछि केरा स्ट्रक्चर कोन हो ठीक है बट हमें जदी रूल को ठीक से बुझिया तो हमें यार स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ करि सके ठीक है तो हमको गोटे स्ट्रक्चर ड्रॉ करे पहले हम फर्स्ट जाने पड़िबो सेंट्रल एटम की वो माने सराउंडिंग एटम्स राइट एंड सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम भीतर केतटा बॉन्ड अछि
नंबर ऑफ बॉन्ड तो एटलीस्ट तुमको जानिବାକୁ पड़िବ। देन वंस बॉन्ड बनी सारा पर हमको देखिବାର ଅଛି कौन केतटा लोन पेयर अछि टोटल मॉलिक्यूल पाखरे नंबर ऑफ लोन पेयर केते रहइयो ठीक अछि और देन हम सेटिंग बनले भी सरीबनी आपनको हमको पॉइंट रे जदी मॉलिक्यूल चार्ज स्पेसिस थिबो हमको थर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करिकि डिफरेंट एटम माननको तार थर्मल चार्ज भी असाइन करबे ठीक अछि देखो हम ड्रा करिबा देखो हमको गोटे स्ट्रक्चर ड्रा करे पड़बो हमको कौन कौन निहाती नेसेसरी हमको कौन कौन जानिया दरकार हमको जानिया दरकार कि गोटे n1 हमको कैलकुलेट करा छै n1 द मीनिंग कोन n1 होछ आपनकर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स total number of valence electrons ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जानिबा केन तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जानिबा केन तो तापर आपको जानिता दरकार कि आपण माने एटा एटलीस्ट जानिता दरकार कि गोटे एटम रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते अछि ठीक है अपन जानिते वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोन the number of electrons present in the outermost cell गोटे एटम रो वैलेंस सेल रे जति कि इलेक्ट्रॉन थांती सेटा भीतर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थांती और अपन कहि परिबे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके तो सब एटम मानकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपन का मन रखिछन जदि अपन को ऑल ऑफ सडन पचरावा कि सल्फर रो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते अपन को कहि परिबे तर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बोली अपन को पचरावा फास्फोरस रो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन कहि बोले नहीं ना देखो गोटे ट्रिक अच्छी अपन से ट्रिक जानला पर अपन सब एलिमेंट मानकर कहि परिबे बैलेंस इलेक्ट्रॉन के तो अपन ए टिप्स मन रखिए इंफॉर्मेशन राइट अपन को मन रखिए पड़े छोटो टिप्स बट अपन को बहुत काम आसे कौन मन रखिए पड़े अपन को देखो फर्स्ट अपन जानते हैं पीरियड टेबल होती सेकंड ग्रुप ये बेरिलियम देन बोरॉन कार्बन देन नाइट्रोजन then oxygen then oxygen previous chlorine beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine then ଆସିବ neon ठीक ଅଛି ये होछ आपनकर ये होछ सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट ग्रुप ठीक ଅଛି तो हम जो देखियो तो बेरिलियम अंडर के संति बेरिलियम फैमिली सेकंड मेंबर किए मैग्नीशियम बोरॉन नो अल्यूमिनियम कार्बन नो सिलिकॉन नाइट्रोजन नो फास्फोरस ऑक्सीजन नो सल्फर क्लोरीन नियन नो ये आर्गन राइट तो ये होछ आपनकर डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट फैमिली तो देखंतु केमति नंबर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये होछ हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यूजुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम फैमिली का होछ के तो बेरिलियम फैमिली जितने भी मेंबर अच्छा समस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अच्छी ओके बोरॉन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छा 3 कार्बन फैमिली 4 नाइट्रोजन फैमिली अच्छा 5 ऑक्सीजन फैमिली अच्छा 6 and chlorine और हेलोजन सनंतर अच्छा 7 and पांच नोबल गैस राइट और इनर्ट गैसेस जो हमने बहुत ले 1962 सनंतर अच्छा कहते हैं 8 यानी जो आउटर मोस्ट सब 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन of 8 and 7 6 5 4 3 2 ओके अपन एमपी चाहिए मन रखि परिबे डिफरेंट ग्रुप मानकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन जाके मन रखिए बहुत इजी रे मन रह जाओ अपन आपको नोट कर देंगे बड़े से नोट कर देंगे आपको राइट हमको कौन दरकार ना फर्स्ट हमको देखा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमते काउंट करा जाए हमें ताकि n1 जोटा n1 हम कैलकुलेट करियो ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जस्ट हमको ऐड करियो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करियो n1 के अंदर से ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स अपन क्या करिए सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स sum of valence electrons of individual atoms
sum of valence electrons of individual atoms. Individual atoms ମାନଙ୍କର valence electron को हमको add କରିବାର ଅଛି. ओके ତା ସହିତ ଯଦି ସ୍ପେସିସ୍ ଉପରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଦେନ୍ ସେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ को add କରିବାର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଇଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ add କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ ଯଦି ସ୍ପେସିସ୍ ଉପରେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ନ ଥାଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କୁ କ'ଣ କରାହବ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇନସ୍ माइनस पॉजिटिव चार्ज इन प्रेजेंट तो ये होची आपनकर फार्मूला और n1 दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करियार मेथड सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज इफ प्रेजेंट प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ प्रेजेंट ये होची आपनकर वैलेंस n1 और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन देन हमको कैलकुलेट करबा पड़िबो n2 कोन n2 होची आपनकर total number of electrons right total number of electrons after octet completion after octet completion तो octet complete हेता परे total केतेटा इलेक्ट्रॉन से स्पेसिस पाखरे प्रेजेंट अछि स्पेसिस पाखरे अब हम जहार ड्रा करियो जो मॉलिक्यूल रो हम स्ट्रक्चर ड्रा करियो आ पाखरे टोटल केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑक्टेट सब एटम्स सनकर इंडिविजुअल एटम्स सनकर ऑक्टेट कंप्लीट हे सला परे त पाखरे केतेटा इलेक्ट्रॉन रहयो ठीक अछि तो तबे फार्मूला कोन तबे फार्मूला होछि जदि मन देखन जदि हाइड्रोजन एटम अछि हाइड्रोजन तो ऑक्टेट की करन दे हाइड्रोजन पे कौन फुलफिल डुप्लेट डुप्लेट पे हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2 मल्टीप्लाई करेगा राइट so n2 can be calculated as 2 into hydrogen atoms is present जदि हाइड्रोजन एटम्स अछंती ताले तापे हमको 2 मल्टीप्लाई करेगा पड़ो प्लस 8 into all other atoms और 8 into total number of other atoms except hydrogen hydrogen को छाड़ी थी कितना हमरा एटम्स अछंती ठीक अछि 8 into total number of other atoms से मीनिंग होची है कि except hydrogen hydrogen को छाड़ी थी कितना एटम हमरा अछि एटा होची मतलब n2 calculation for total number of electrons after octet completion और octet complete हे सला परे total केतेटा इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पाखरे अछि ओके 2 into hydrogen atoms that means 2 gets multiplied with number of hydrogen atoms plus 8 times total number of other atoms except hydrogen hydrogen को छाड़ी के केतेटा एटम्स अछि तब से 8 मल्टीप्लाई करम राइट देन थर्ड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना n3 n3 कोन n3 हो जतनकर नंबर ऑफ shared electrons number of shared electrons that means केतेटा इलेक्ट्रॉन यूज हेछि फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन राइट तो बॉन्ड फॉर्मेशन पे केतेटा इलेक्ट्रॉन यूज हेछि हम जानिबा केमति तो तापर फार्मूला होछि n2 n1 the total number of bonds after total number of electrons after octet completion minus total number of valence electrons तो valence electron को just minus कर the total number of electrons after octet completion yes that you can say n2 minus n1 so this can be calculated as n2 minus n1 or we can get n3 by subtracting n1 from n2 right what is n1 total number of valence electrons. So it is n2 total number of electrons after octet completion. Okay. Then you can find number of bonds n4. n4 gives some of information regarding the number of bonds present in that species or present in that molecule. So molecule केतेटा bond present अछि ता विषय में information दे n4. n4 केमति कैलकुलेट करावे n4 is equal to n3 upon 2 जो हमको information दिए obviously the number of bonds
नंबर ऑफ बॉन्ड्स विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है? तो तीन से नोट कर दिया जाए। आपको अधिक मन रखो, ठीक है? ये बहुत ही इंपोर्टेंट सब टाइम रे आपन काम रहे नंबर ऑफ बैलेंस एंड एटा जल्दी नोट कर दियंतु हम पुनी फर्दर n4 एडिशन n4 सुनो देखा ये होचे आपनकर n4 n4 कोन नंबर ऑफ सॉरी n sorry this is not n4 this is n3 upon 2 n3 upon 2 n3 upon 2 gives us information regarding the number of bonds केतटा बॉन्ड प्रेजेंट अछि ता विषय हमको n3 upon 2 information प्रोवाइड कर ओके देन हमें कैलकुलेट करिया n4 n4 होची कोन n4 होची नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केतटा इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड अछि दैट मींस टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अछि वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतटा इलेक्ट्रॉन रहि जाइछन्ती जो माने बॉन्ड फॉर्मेशन करिना हमें याकु केमति पाइबा याकु हम पाइ परिबा बाय सबट्रैक्टिंग n3 माइनस फ्रॉम n1 n1 रो जदि हमें n3 को माइनस करिबा ताहले हमें पाइ परिबा ना नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स राइट और हमें पाइ परिबा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केतटा इलेक्ट्रॉन शेयर हिची सेटा जो माइनस कर दोछले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स a total number of valence electrons, then we can get n4, a total number of unshared electrons, right? Then देखो जदि n4 नंबर रो इलेक्ट्रॉन सही छंती unshared ताले हमें लोन पेयर इजीली कहि परियो किंतु the number of unshared electrons upon 2 number of unshared electrons upon 2 जदि हम एटा करू छंती n4 upon 2 we can get the number of lone pairs number of lone pairs केतटा lone pairs स्पेसीज पाखरे प्रेजेंट अछि सेटा हमको मेजर करतो ना हम n4 upon 2 yes by dividing 2 हां से how to divide करेगा 2 number of unshared electron को जब हम 2 रे डिवाइड करियो ताले हम पाइबे टोटल नंबर ऑफ lone pairs ओके देखो सेति की हेले भी हमको सब लगे मैं सेति की जानला परे भी स्ट्रक्चर हमारा भूल हो जाई पारे ठीक अछि हमको जानियार कोन अछि हमको जानियार अछि थर्मल चार्ज कैलकुलेशन इति जिन जानि सला परे हमको कोन दरकार थर्मल चार्ज कैलकुलेशन तो थर्मल चार्ज का फार्मूला होचे कोन ना हाउ टू कैलकुलेट थर्मल चार्ज ठीक अछि तो थर्मल चार्ज कोन दैट मींस गोटे एटम ऊपर गोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट थिला जो एटम्स अछंती तो से एटम्स ऊपर कोन चार्ज अछि ठीक अछि द चार्ज that is present over an atom in a molecule गोटे मॉलिक्यूल रे प्रेजेंट थिला एटम ऊपर कोन चार्ज अछि सेटा हम कहउछी थर्मल चार्ज ठीक अछि देखा थर्मल चार्ज का फार्मूला हो जाता है कोन ना ये हो जाता है v minus s by 2 minus u v minus s by 2 minus u then what is v v हो जाता है v stands for number of valence electrons number of valence electron and s stands for
number of shared electrons, number of shared electrons. Okay, U stands for number of unshared, number of unshared electrons. बुझे हमें केमती नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाइबा अकॉर्डिंग टू पाइबा देखो अकॉर्डिंग टू लुईस ऑफ्रेट रूल अकॉर्डिंगली हमें कौन जानते ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जने बॉन्ड फॉर्मेशन करि सला परे और टोटल इलेक्ट्रॉन हिजो केते 8 आउटर मोस्ट सेल रे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते हिजो 8 आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हला परे आउटर मोस्ट सेल रे 8 इलेक्ट्रॉन्स लुईस तो सेम टोटल कि एटम्स माने bond formation currently only to obtain 8 electrons in the outermost cell, right? That means bond formation पर outermost cell रे number of electrons and possess करने कहते 8 electrons. So the total number of electron 8 after bond formation and S which is number of shared electrons and number of unshared electrons can be calculated by subtracting number of shared electrons from 8. अरे 8 इलेक्ट्रॉन रो टोटल जदी 8 इलेक्ट्रॉन अछि गोटे एटम ऊपर 8 minus number of shared electron is equal to number of unshared electron is equal to 8 minus s. s कोन ना s होची number of shared electron. ठीक अछि एटा होची आपनकर u कैलकुलेशन करियर ट्रिक अपन u एमती कैलकुलेट कर करिए. ठीक अछि देखो ये होची आपनकर भारी भरकम कैलकुलेशन अपन एते बड़ अपन चाहिले एमती कैलकुलेट कर करिए नहीं तो हम पाखरे शॉर्ट ट्रिक भी अछि जोटा ओन इन्वेंटर हम जोटा पिला को सिखोछन अपन केम जानि करिवे फार्मल चार्ज जानिबार फार्मूला होछि नंबर ऑफ बॉन्ड ठीक अछि केतटा बॉन्ड से बनै छै गोटे स्पेसिस ठीक अछि नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस वैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस वैलेंसी अपने एटा कहि छलिए फार्मल चार्ज number of bonds minus valency the total केतटा bond से प्रोड्यूस माने फॉर्म करि छी and what is its valency valency केते मान तो ऑक्सीजन तीनटा बॉन्ड फॉर्मेशन करि छन और valency होची 2 then ऑक्सीजन ऊपर थर्मल चार्ज कोन आछो 3 minus 2 केते प्लस 1 ऑक्सीजन ऊपर आछो प्लस yes देखो बटन देखिए हमें how to draw Lewis structure ठीक अछि ये अपन आपनकर एते इन्फॉर्मेशन अपन पास लिखि रखि दियंतु एटा देखंतु डाउन टिप्स टिप्स ठीक अछि अपन जाके यूज करिकि शॉर्टकट रे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करि परिबे गोटे एटम रे गोटे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल रो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपन जे पाई जाउछन्ती टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जानि सला परे you can get its thermal charge. So you can get the thermal charge of each individual atom very easily by using these tips. ये tips को अपने use करके easily thermal charge calculate कर सकते हैं. Okay? तो इनसे note कर दिया इनको. देखा ना? देखिए. चलना. ठीक है. चलो देख. बर्तन में ड्रॉ करिए Lewis structure. देखो हमें केमती हमें तो इतने शब्द से जाने ले हमें पर्यंत जान ले कि केमती नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करियो केमती नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करियो ठीक है थर्मल चार्ज केमती कैलकुलेट करियो तो इसे जान ले बट ठीक है बट अबे मैं तो Lewis स्ट्रक्चर ड्रॉ करियो हम तक डिफरेंट ऑप्शन थियो एटम्स गोटे मॉलिक्यूल हमको गिवन अछि से मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स एंड ऑप्शन प्रेजेंट अछि गोटे एटम रे तो मॉलिक्यूल बन नथियो राइट डिफरेंट एटम्स में प्रेजेंट थे तो हमें जानिबा केमती व्हिच एटम should be considered as the central atom. हमें कहाँ को central atom choose करेगा. This is also an important part.
of least structure. Least structure draw କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ first ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ कि which atom is the central atom or which atom to be considered to be the central atom. ତାହାକୁ central atom ଭଳିଆ ମାନେ central atom ଭାବରେ consider କରାଯିବା ଉଚିତ. ଠିକ ଅଛି. ଦେଖନ୍ତୁ selection of central atom. Selection of a central atom. Yes, सबले मन रखिए central atom selection not that difficult. इधर तो वेट अधिक difficult नहीं है. ଆପଣ simple କେମିତି କି ଜାଣିବେ central atom କିଏ मन रखନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ the least electronegative atom. The least electronegative atom except hydrogen. Hydrogen को छाड़ी की जी आपनका least electronegative atom अछि से हो जाता central atom. देखो the least electronegative atom. The least electronegative atom except hydrogen atom. Hydrogen atom को छाड़ी की जी आपनका least electronegative atom अछि that should be considered as central atom. देखो the least electronegative atom except hydrogen atom is considered to be the central atom. Is considered to be the central atom. जोड़ो का मैं C एरो रिप्रेजेंट करते हैं. C for central atom. ठीक है सर. The least electronegative atom except hydrogen atom is considered to be the central atom. ठीक है सर. अच्छा मत कहूँ अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन जाना अच्छा नहीं. What do you mean by electronegativity? जाना अच्छी तो. Okay. देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी जाना नहीं तो सुनी जरूर पड़ता. Electronegativity होती है the relative tendency or the relative ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Shared pair of electron को निज आड़े attract करियार relative ability or relative tendency को atom रा electronegativity बोले कहते हैं. ठीक है जोटा को अपन देखिए सबसे अधिक अपन को पीरियोडिक टेबल ले सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किए फ्लोरीन. ठीक फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होची फ्लोरीन. तापर आसे अपन रखी ऑक्सीजन. देन ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन पर ठीक कार्बन. कार्बन पर कार्बन पर क्या है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन पर है बोरॉन. बोरॉन पर है बेरिलियम. बेरिलियम पर है लिथियम. ओके लिथियम पर ये सब कम लिथियम रो. तो क्लोरीन आसो बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होची 4. ऑक्सीजन पई 3.5. नाइट्रोजन पई 3 and carbon पई it is 2.5 and for hydrogen it is 2.1. boron पई होची 2. बेरिलियम पई 1.5. लिथियम पई होची 1. ठीक है सर. आपको मन रखि दबो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल होची फ्लोरीन and oxygen होची सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल. then nitrogen then आसे अपन कार्बन हाइड्रोजन बोरॉन बेरिलियम लिथियम. ठीक है सर. this is the values for this is the different electronegativity value for different elements. different element माने ये होची different electronegativity. ठीक है सर. एतिक इनसो अपन नोट कर दिया वर्क पड़ी अपन को टाइम. तो देखा पहला सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम. तो उसको आगे काको सेंट्रल एटम चूज करेगा. least electronegative atom except hydrogen atom is considered to be the central atom. तो सबसे जोटा अपन least electronegative atom से अपन total number of electrons से अछंती. सॉरी total number of अपन पाखे जो स्पेसिस अपन पाखे गिवन अछंती. स्पेसिस से जो डिफरेंट एटम्स में प्रेजेंट अछंती तो ता भीतर अपन चूज करिवे सेंट्रल एटम की केमती ना बाय वेरीफाइंग देयर the electronegativity value. Okay तो ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हो जाता है सेंट्रल एटम. बट हाइड्रोजन नहीं करता एक्सेप्ट हाइड्रोजन.
ओके चलो थोड़ा करिए डिक्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखो कौन कौन जो स्ट्रक्चर हम थोड़ा प्रेजेंट करियो मान तो तुमको ये जस्ट टिके टाइम पूर्व गिवन मॉलिक्यूल देइली COCl अपन को मॉलिक्यूल टाइप्स दिए एंड अपन को कहे छै कि अगर लुईस स्ट्रक्चर प्रोग्राम ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर COCl COCl तो पे लुईस स्ट्रक्चर प्रोग्राम अछि ठीक है हमको फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए को N1 N1 कड़ा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से थोड़े प्रोवाइड करथिले होते बटन इनफॉरमेशन तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते अपन सेडी देखंतु तो इटा अछि फर्स्ट अछि कार्बन कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते को 4 ठीक है 4 प्लस एडी के अछि गो तबरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते 6 रहना नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन केते 6 क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 केतेटा क्लोरीन अछि डेटा डेटा पई ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई करो ट्वाइस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन होछि के 7 देखा कि नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज चार्ज टोटल के जीरो चार्ज केते अछि जीरो अछि जीरो चार्ज अछि माने आपण ताको किछि यदि नेगेटिव चार्ज थांता है ऐड करथन यदि पॉजिटिव चार्ज थांता ताले सब्ट्रैक्ट करथन जेतो किछि चार्ज नहीं हमको किछि करे दरकार पड़ियो ये टोटल के तोज देखो ये होछि 7 टू 14 14 प्लस 6 ठीक है 20 20 प्लस 4 होछि 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होछि 20 ठीक है देन हमको N2 कैलकुलेट करबार अछि N2 कड़ा N2 होछि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन करे केते इलेक्ट्रॉन टोटल केते इलेक्ट्रॉन होछि सेटा होछि है ना N2 राइट हमें N2 अपन देखियो तो N2 रे N2 जब अपन कैलकुलेट करियो देखा हमें कहते 2 into हाइड्रोजन एटम प्लस 8 into all other atoms और 8 into total number of other atoms ठीक है यदि हाइड्रोजन अछि कि नहीं यदि हाइड्रोजन नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई करियो कि हम तो कितना मल्टीप्लाई करियो अछि 8 टोटल नंबर ऑफ एटम करियो अछि देखो कार्बन गोटे ऑक्सीजन गोटे बीटा बीटा क्लोरीन मिसी क्वेश्चन टोटल 4 8 into 4 8 into 4 केते 8 4 जा 32 the total number of electrons after octet completion will be 32 then calculate n3 n3 केते सोचो मैं कहथिले n3 द फॉर्मूला होछि n2 n1 n2 होछि केते 32 32 24 24 या फिर केते सोचो 8 total number of shared electrons will be around 8 and total number of bonds and pairs n3 upon 2 n3 upon 2 से 8 upon 2 होछि केते 4 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम वगैरह केते 4 तो बॉन्ड केते আছে চারটা बॉटम देखो COCl2 रे हमको सेंट्रल एटम की हम चूज करियर আছে फर्स्ट एडी सेंट्रल एटम के देखो सबटू लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन कार्बन क्लोरीन ये सब से मैंने लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कार्बन को कंसीडर करिया सेंट्रल एटम कार्बन को सेंट्रल एटम लग रखन मध्य ठीक है सराउंडिंग एटम की जोन रही गले ऑक्सीजन एंड क्लोरीन दुईटा क्लोरीन अछि गोटा अछि ऑक्सीजन अपन ताको अरेंज करन पड़ी किछि किछि वेरा अपन ताको एकस कार्बन और रख करियो कार्बन हो सेंटर रे एंड सराउंडिंग रे गोटा ऑक्सीजन दुईटा क्लोरीन ठीक है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमको मिलेगा केते 4 टोटल बॉन्ड केते मिलेगा चारटा तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना दिबो दुईटा ऑक्सीजन से तो फर्स्ट दुईटा बॉन्ड बना दियो कार्बन आ कितना बॉन्ड रह गला दुईटा बॉन्ड रह गला तो गोटे बॉन्ड बना विथ क्लोरीन आ गोटे बॉन्ड बना विथ अनदर क्लोरीन तो ये होछ आपनकर COCl2 COCl2 देखो एती बनला पर भी आपनकर स्ट्रक्चर कंप्लीट होला बोली आपन केबे भी कंफर्म लेबेन कोन करिवे ना थर्मल चार्ज कैलकुलेट करिवे केमति बाय द टिप्स आपन टिप्स कहथिले आपन से फार्मूला यूज करके बनै करिवे ठीक छै नहीं तो अपन टिप्स से यूज कर करिवे देखो फार्मूला अपन यूज करिवे फास्ट अपन बुझी करिवे अधिक बेटर फार्मूला जानि काम दे बेस क्वेश्चन लेक्चर अछि देखिए अपन माने पॉज करके लिख दे ठीक है वीडियो को पॉज करके अपन आंसर माने आपको नोट कर दे देखो तो थर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करा है
आम जब थर्मल चार्ज कैलकुलेट करवा कार्बन थर्मल चार्ज कार्बन एटम कार्बन एटम थर्मल चार्ज फॉर्मूला कौन कहते फॉर्मूला कहते थर्मल चार्ज कैलकुलेशन V V for valence electrons minus shared electrons by 2 minus Q ठीक है देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन फाइंड करते 4 ठीक है माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन से शेयर कर देखो इट वन बीटा बॉन्ड मींस कितना इलेक्ट्रॉन 2 bonds means 4 electrons इट वन गोटे बॉन्ड में बीटा इलेक्ट्रॉन तो 6 plus 2 कितने सही 4 plus 2 कितने 6 इट वन अनदर बॉन्ड टोटल बॉन्ड बने चाहिए चारटा बॉन्ड तो चारटा बॉन्ड रे ईच बॉन्ड रे बीटा इलेक्ट्रॉन तो चारटा बॉन्ड रे कितना आता है 8 इलेक्ट्रॉन 2 into 4 टोटल कितना आता है 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 8 minus 2 ठीक है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना असला टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो देखो कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स असला फार्मूला कैसे जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 minus शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 8 हम यदि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन u करिवा u रा फार्मूला था तुम्हारा कोना s minus सॉरी 8 minus s 8 minus s शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो 8 है लगे तो अच्छी 8 minus 8 कितने 0 टोटल इट इज q is the 0 then ये लगे तो 4 minus 8 upon 2 से 4 4 minus 4 0 कार्बन का कैसा लगे 0 फॉर्मूला चार्ज जोड़ा मेंशन न कले विचार किछ असुविधा नहीं है ठीक है सेटा कार्बन ऊपर किसी चार्ज नहीं जानते गल देन सिमिलर वे ऑक्सीजन अकड़ा देखो हमें एटा हो काढले कोना ना बाय यूजिंग थर्मल चार्ज और बाय यूजिंग मेथड और फार्मूला टिप्स यूज करिए हम काढी करिए एमती ना एट देखो हम कहते थर्मल चार्ज सिस्टम के टिप्स को कहते टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस इट्स वैलेंस तो कार्बन कितना बॉन्ड बने देखो चारटा बॉन्ड बने ठीक है तो थर्मल चार्ज ऑफ कार्बन हम कैलकुलेट करि बैठा केमती टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बने 4 ठीक है माइनस और इनका वैलेंस ऑफ कार्बन कार्बन वैलेंस भी 4 चारटा बॉन्ड बना दिसे और 4 minus 4 कितने स्टेप हो 0 देखा ये साथ में बन गया 0 देखिए अपन ऐसे ही कैलकुलेशन कला पर पहले 0 ठीक है तो चार्ज थर्मल चार्ज और कार्बन इज 0 तो सेंटी अपन क्लोरीन का काउंट कर करिए तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बने देखा गोटे बॉन्ड बने वैलेंस कितने गोटे 1 minus 1 0 ये भी 0 थर्मल चार्ज 0 इतनी क्लोरीन ऊपर 0 थर्मल चार्ज सेम कंडीशन ऑक्सीजन कंडीशन देखा ऑक्सीजन बने बीटा बॉन्ड कितना बॉन्ड बने बीटा वैलेंस कितने 2 अब 2 minus 2 कितने 0 तो ये भी थर्मल चार्ज 0 दैट मींस अपना स्ट्रक्चर इज कंप्लीट इट हाउ द अपना लुईस स्ट्रक्चर फॉर COCl2 COCl2 पे इट हाउ द अपना लुईस स्ट्रक्चर ठीक है अपन चाहेले एमसी मेथड यूज करके कैलकुलेट करिए थर्मल चार्ज किंतु एमसी वे रे अपन आहुरी स्पीड कैलकुलेट करिए जो माने यूजुअली जेई नीट और जेई एडवांस कहीं ट्राई करूछंदी तो ये जो कैलकुलेशन थर्मल चार्ज कैलकुलेशन का टिप्स फॉलो करले मोर इजी कैलकुलेट करिए अपन को टाइम बच जाओ बहुत इते अपन को देखिए नहीं दरकार पड़ेगा ओके देखो तो अपन और नेक्स्ट आउट मॉलिक्यूल बना अपन का आउट मॉलिक्यूल प्रोवाइड होची अपन तारा ट्राई करें अपन को अनदर मॉलिक्यूल दिया है दोस्त में अपन ड्रा करेंगे ड्रा द लिस्ट स्ट्रक्चर draw the list structure for O3 molecule O3 molecule का list structure ड्रा करेंगे बराबर